Hello world, this is Shruti Pandey, and today I'm very excited for this podcast and episode because जो गेस्ट मैंने बुलाए हैं is also from testing, the field that I am grown into and I love the most. So probably it might sound like a pro testing or a one-on-one testers aap sabko. So please bear with us. But this is really very exciting for me and looking forward to this one. Please help me welcome Robin Gupta, VP Engineering at ProR Testing. Thank you so much, Robin. Thank you. Happy to have you here. Yeah, it's an honor for me. Thank you so much for having me. You're too kind to say that. And I really appreciate कि हम आज finally मिल रहे हैं. English हिंदी जैसे भी आपको बात करनी हो, it's totally cool. There's no problem between two testers, right? We are the Yeah, best 100%. that we can be. So Yeah. मैंने आपके लिए 3 questions create किए हैं जो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसके साथ बात करूं या किसके साथ वो कन्वर्सेशन करूं कि मजा आए. तो आई थिंक मैंने बेस्ट वाले आपके लिए सेव कर रखे थे. Okay. इफ यू डोंट माइंड शुड आई स्टार्ट, या फिर अगर आपको कुछ Yeah. पहले बोलना है तो पहले वो बोल के फिर अपन शुरू करते हैं जैसे भी. नहीं, let's start. I think let's get into the main course. Yeah. Okay, ठीक है. So my first question for you is, what do you think are the biggest challenges for testing? अभी जो mid 2023 रह गया है और जो early 24 आने वाला है, आपको क्या लगता है इस पूरे सेक्शन और क्वार्टर जैसे हमें हमसे बोला जाता है, what do you think are the biggest challenges for testing in this time frame? Yeah. Interestingly, Pallav, there are many challenges in my view, but thoda sa there is this wave of AI Yeah. which is going on, and every now and then people ask me, "Acha, what is the impact on testing? हमें कैसे करना चाहिए? What we should learn?" So on so forth, which is good. People are curious. But people are a little confused. Oh, इतना सब चल रहा है, इसमें क्या करें, उसमें क्या करें? They are a little bothered, right? So that is one problem with the solution on its own that I see. ठीक है, people should be curious, but they shouldn't go off the main path, which is software testing or quality or software engineering, right? So these are like side quests in video game. ठीक है, ये main video game है, उसके side quests हैं. You can do some of them as well, but stick to the main course. That is the main point. That is one challenge. Misinformation, little bit confusion, which we'll sort out. These waves have came and gone. आपने देखा है, I have seen it. People will see it as they are growing in this field. It is perfectly fine. इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलिवेंट पॉइंट्स आपने कहा रॉबिन. आपको लगता है सिर्फ एआई वाला चीज है जो इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर टेस्टिंग, या और भी साइड डिशेस हैं इसके अलावा? कई सारे हैं in my view. मतलब it's a full buffet. काफी problems हैं. And see, when you look at it from an industry perspective, right, we are very nascent. Like automobile industry is very old, so everything has stabilized. Kaizen है, factory model है, blah blah. कई चीजें हैं. Software testing is a very nascent industry. Software engineering itself is very young. So now what has started happening is, since we are new, plus there is flush money, pre-VC money, pre-COVID, COVID के पास से, plus there are many people who feel that they are testers but have no clue, they don't know Q about quality. So they will come. You There will deserve be a a lot special of applause for this point. I mean, आपने बोल दिया. Baba, we are testers in my, like, I started as a tester, so if we see a defect, we see a defect. Correct. We'll file a bug. अब वो fix होगा कि नहीं, that's a different problem. But I see this as a bug in production, that there is definitely a lot of misinformation in the field, which should be cleared so that the young ones, like Star Wars में जैसे young Padawans, they should not get the wrong knowledge. They shouldn't think कि automation is only testing, या testing में ऐसा होना चाहिए, या blah blah whatever. Many things are there. And thank you for bringing the point of the younger generation, because when some of these young people approach me, I have heard one amazing problem जो मुझे लगता था यार ऐसे अपने साइड कैसे हो सकता है या कहीं यूएस साइड में कैसे हो सकता है. बट यू नो, पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, जब वो कहते हैं कि उनके मैनेजर्स को कोई चीज उसी तरीके से चाहिए क्योंकि सो एंड सो टेस्टिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कहा है, इट इज वेरी शॉकिंग टू हियर. आई मीन, आपको लगता है कि इंडिया में ही खाली चीजें सही नहीं चलती हैं, बट इंडिया के बाहर भी टेस्टिंग में वही सारी चीजें हो रही हैं. एंड दैट वाज द बिगेस्ट शॉक टू मी व्हेन वो बेचारा बंदा इतना परेशान था कि मैं कितनी भी सही चीज कर लूं, मेरा मैनेजर बोलते हैं ऐसे ही करो जो उस दिग्गज ने कहा है.
बट हाँ दैट इज द एग्जैक्ट थिंग राइट, कि वो आपको कैसे पता वो ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी, या फिर उसके अलावा भी आई थिंक जिस तरीके से आप प्रीच करते हो या बताते हो, कुछ तो कॉमन सेंस लोगों को यूज करनी चाहिए, राइट? एंड आई थिंक करना चाहिए। द बिगेस्ट थिंग विच इज लैकिंग फॉर एनीथिंग इन जनरल, कॉमन सेंस या के नाम में कॉमन है, वो कॉमन रह नहीं गई है। नहीं बट रह गया। आई थिंक करेक्ट। काफी आपने पैंडोरास बॉक्स ओपन कर दिया ये सारी चीजें, दिमाग कितनी सारी अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। सो कमिंग अगेन टू जो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो बिगेस्ट चैलेंजेस तो हो गई। करेक्ट। मूविंग अहेड ऑन द सेम लाइन, बिकॉज आई थिंक चैलेंजेस और फ्यूचर आई थिंक किसी ना किसी तरीके से हैंड इन हैंड चलता है। तो करेक्ट। गिवन एआई वाला भी जो सिचुएशन चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक विल बी द फ्यूचर ऑफ टेस्टिंग जॉब्स? क्योंकि यू नो हाँ विद द चैलेंजेस बहुत लोगों को डर लगता है, और ये आपके और मेरे टाइम से भी लोगों को डर लगता था कि भैया ये कब तक चलेगी, कब तक ये करेक्ट। बेटर अपने को मिलेगा। और पैंडेमिक के बाद अलग ही लेवल का अपने लोगों को डर लगने लगा था कि यार करेक्ट। पहले तो तुम ही निकाले जाओगे। सो करेक्ट। क्या लगता है आपको कि what is going to be the future of testing jobs? I think it is going to be very, very bright. And there are two data points from where I've derived that conclusion. पहला तो ये कि when I started my IT job, I've done other jobs. So when Yeah. I started my IT job in 2009, Selenium, QTP were in the market. Selenium was pretty new. And मतलब तब भी एक ये नोशन था कि यार ऑटोमेशन सब हो जाएगा, फिर मैनुअल टेस्टर्स क्या करेंगे, whatever. So I've been through that one phase, and now this other fancy tool has come, which is great. I'm all looking forward to it. कि large language models हैं, चैट जीपीटी, एक्स जीपीटी, whatever, सारी चीजें हैं। इंटरेस्टिंगली, अगर किसी ने भी इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संग थोड़ा सा भी काम किया है, दे कैन फिगर आउट वन थिंग कि एज अपोज टू वेबसाइट टेस्टिंग या मोबाइल टेस्टिंग, वेयर यू हैव सेट एक्सपेक्टेशंस एंड देन सेट आउटकम्स कि हाँ यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिस विल हैपन। Right. विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स द वैल्यू ऑफ टेस्टिंग improves exponentially, क्योंकि आप जब भी कुछ प्रॉम्प्ट डालोगे, इट माइट गिव अ न्यू आंसर, Hmm. स्लाइटली डिफरेंट आंसर। तो Hmm. यू कांट ऑटोमेट दीज थिंग्स नेटिवली unless you do some fuzzy mapping, fuzzy matching, तो टेस्टर्स का काम और Correct. बढ़ जाता है। Correct. It's interestingly, I was telling somebody in my team, so I had Provar Labs, which is the innovation and R&D center for Provar, and we are working on some of these technologies. So I was telling somebody कि जब आप किसी वेबसाइट पे काम करते हो, the development is complicated and लोग कहते हैं कि testing is easy, which I deny to some extent. Large language models में it's actually the opposite. The development might be simpler to some extent, but जो testing है, ensuring that it's bias free, it adheres to the requirements, it fits all the outcomes, बहुत मुश्किल काम है, and therefore to my parent point कि very bright future in general. ये बात है यार, अगर आप और हम दोनों सेम ही चीज मतलब हाँ हाँ करेंगे तो लोगों को मजा कैसे आएगा? आजकल मिर्च मसाला तो तब लगता है ना जब दोनों बवाल करें, नहीं 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 तुमने सही बोला। बट आई थिंक हाँ या यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड मुझे हमेशा से एज अ टेस्टर ये लगता था कि मैं तुम्हारा पहला यूजर एक्सपीरियंस हूँ। अगर मैं exactly. बोलूँ कि भाई मेरे को ये बटन समझ नहीं आ रहा, ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, तो डोंट टेक इट एज एन ऑफेंसिव थिंग कि यार टेस्टर है तो ये Yeah. इंडिया पाकिस्तान वाला चीज मत करो। मतलब ये मत करो नहीं कि नहीं भाई हम दोनों दुश्मन है, जरूरी नहीं है दुश्मन हो। इंडिया पाकिस्तान में भी करेक्ट। कोई भाईचारा आ सकता है, पर जिस तरीके से डेवलपमेंट और टेस्टिंग में नहीं आता ना, वो बहुत तकलीफ होती है। सो आई थिंक करेक्ट। वेरी वेरी रेलिवेंट पॉइंट्स की टेस्टिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड जिस तरीके से हमें लाख ट्रेनिंग दी जाती थी क्यूटीपी यूएफटी इन सारी चीजों पे, लोड रनर पे, पर आपने भी शायद देखा होगा जब भी यूज करने की बारी आती थी हमेशा बजट के प्रॉब्लम होते थे और बोला जाता था कुछ ओपन सोर्स में। करेक्ट। फायदा तो वही, मतलब ओपन सोर्स से काम कराते थे, भले लाख हमें कितने लाइसेंस टूल सिखा दिए जाएं। एंड करेक्ट। ये ये आई थिंक डर हमेशा से टेस्टर्स के मन में या फील्ड में डाला गया है कि ऑटोमेशन कर दोगे जॉब चली जाएगी, ये कर दोगे जॉब चली करेक्ट। जाएगी। पर मतलब इतने 10 11 12 साल निकाल लिए, इतना सब कर लिए, किसी की जॉब नहीं गई, ना डेवलपर की ना किसी के टेस्टर की। सो एंड नहीं। अगेन आई थिंक एडिंग टू योर पॉइंट, आई ऑल्सो फील कि एआई कोई नई चीज नहीं है। इसको एक नया रैपर डाल के एक अलग ही चीज क्रिएट एग्जैक्टली। किया है। एआई तो पहले भी था, अगर जानी होती तो सबकी तब भी जा सकती थी। तो मतलब का वो जो अपने यहाँ कहते हैं ना हवा क्रिएट करना या केओस एग्जैक्टली। क्रिएट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी इन द लॉन्ग रन। सो क्योंकि आपने प्रोवार के बारे में और ऐसे मेंशन किया, इफ इट इज नॉट
very problematic to ask. How is your life as a VP engineer at ProR? Because yes, you have done many jobs. You have been a lecturer, आपने पढ़ाया है, आपने टेस्टिंग की जॉब की है, and then when you are heading an entire VP engineering team, कैसी कैसी है आपकी लाइफ एट डू? Yeah, well, there are many things. But yeah, this is very interview grade answer that I do three things. ओके. So PPT is what I call them. PPT, like not a presentation, people, process, and technology. It always starts with the people. कि जैसे आपने बोला कि dev versus QA का जो एक हसल टसल है, right? वैसी चीजें वो जो कल्चर बग्स हैं या जो कल्चर डेट है, नॉट टेक्निकल डेट और सॉफ्टवेयर बग्स, बट ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए. हाउ डू वी इनकलकेट द राइट कल्चर? वी आर वन टीम, वी आर इंजीनियरिंग, सब इंजीनियर्स हैं बाबा, राइट? एंड इफ समबडी हैज टू बी ब्लेम्ड, लाइक दैट इज टू बी मी, नोबडी एल्स ऑन द टीम. अगर कुछ हो गया है, कुछ प्रोडक्शन बग आ गया है, दैट इज मी, डोंट वरी. So psychological safety, cultural issues, that is the first thing. Start with the people always. दूसरा है processes. Now people won't do things on their own. They might, but with some motivation, thoda process ke sang, they need to move in a certain direction. So how do we remain laser focused? What do we measure? Very tough question. Another podcast someday. Yes, And then last but not the least, tech mein kaisa hai? How do we make the most impact for our customers? It's not about ki haan, we will do some fancy front end technology. It's about with what we have, how can we deliver the most impactful outcome हमारे customers के लिए, who are interestingly testers, who we love and adore, कि हाँ, how to make their lives easier. They can deploy on a Friday and उसके बाद एकदम आराम से chill, they can chill on the weekend, not worry कि अरे अब क्या होगा, ये हो गया, चल नहीं रहा है, fail हो गया, whatever. So that's what we look towards. That was such a good thought. And मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, which is a difficult question, I feel, but I think it needs to be asked and answered. Which is जिस तरीके से पैंडेमिक में बहुत हमने मून लाइटिंग का सुना, हमने सुना बहुत पैसे दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हुई, बट ऑन द आई थिंक साइड लाइन्स एक चीज शुरू हुई थी, जो कि आई थिंक क्वाइट क्विटिंग जो वर्ड यूज कर रहे हैं, वो उस टाइम से ही हो चुका था कि लोग डिजाइन कर रहे थे, उनको इतना टॉर्चर, मैनिपुलेट, गैसलाइट किया जा रहा था कि बेचारे छोड़ रहे थे, भाई बस हो गया, रख अपने पास. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग, एंड ये जो ले ऑफ का सिचुएशन है, जो कि उस समय से जो शुरू हुआ है, वो सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि वो कम होने का दिखाई दे रहा है कोई गुंजाइश, बी इट टेस्टिंग, बी इट डेवलपमेंट, बी इट एनी जॉब इन जनरल. So what is your message for people who are struggling with that, layoff situation and job situation currently? It would really help. Yeah, 100%. See, one thing is, if, okay, there are binary scenarios always. या तो somebody is impacted या फिर not. But for all those scenarios, the answer is pretty much same. काम पे ध्यान दो, learning पे ध्यान दो. Interestingly, we are going through this wave of AI and generative AI, large language models. Learn new things, love your work. An employee would never be, how do I put it, as softly and publicly as possible, that it's nice to say we are family, but most of us are not working for a non-profit organization. That organization has some financial goals, right? So thoda sa stay aligned to that. How can we make the most impact for the customers? Baki these things will come and go. We've been through this. Interestingly, जब मैंने first job join किया था, my joining was delayed by 1 year, and then I taught at an engineering college, and that is how I became a lecturer. So 2008 2009 का था, many things happened, many offer letters were rescinded, काफी चीजें हो गई थी, but ठीक है, we are alive, enjoying online, having a conversation, so tough times will come and go. It's perfectly fine. मैंने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड गेस्ट या टेस्टर आज तक इंटरव्यू नहीं किया है इस पॉडकास्ट पे. सो पीपल, इफ यू आर थिंकिंग ये चीज इतनी सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई थिंक कुडोज टू रॉबिन कि वो इतने आसानी से बोल दे रहे, विदाउट पुटिंग एनी फ्लफ वर्ड्स एंड एक्स्ट्रास. वो बिना मतलब की भूमिका बना गया, ये वो इतने इजीली और इतनी सरलता से आपने चीजें बोल दी ना. दिस इज अमेजिंग एंड हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज I don't usually get people who do these things easily. So I highly appreciated Robin. And अगर आपको ऐसा लगता है कि यार श्रुति ने ये चीज तो पूछी ही नहीं, ये तो इसको पूछना चाहिए था, या फिर कुछ आपको बोलने की इच्छा, जो भी आपको लगे, if there is anything at all, please, the stage is all yours.
Okay, I think this is the toughest question. A blank slate. आपको क्या करना है अब ये the mic is on to you. But ठीक है. माइक Nothing तो much अभी to तक add. भी आपके पास Yeah. था, मैंने बस बोल के आपको ऑन स्पॉट डाल दिया. Spot. हाँ ठीक है. I think let's go back to where we started. थोड़ा सा there is this disinformation. I don't think if that is the right word or not. But people like you, Shruti, जैसे आप कर रहे हो, others are also standing up now. I have a, a very close knit group of friends in the DevRel world who are also standing up for similar things. कि ठीक है, what is the right information? It's not about कि ये framework करो, ये मत करो, don't go to this, whatever. It's more about कि आपका goal क्या है. And long story short, customer impact के बारे में सीखो is the first thing which I tell everybody in engineering or outside. The second thing is keep learning, and then therefore the third thing is responsibility on you and me and the others to uplift everybody. Malab, I don't think we can grow. Even the automobile industry didn't, like somebody didn't become the superstar. Tesla wasn't born overnight. So हमें साथ में करना पड़ेगा. Only then we'll grow as a community. I really enjoyed talking with you, Robin. बहुत ही मजा आ गया. रॉबिन हुड पांडे जैसा कुछ मारने की मुझे इच्छा हो रही है. मैं इस इतने अच्छे पॉडकास्ट को रुइन नहीं करूंगी अपनी खराब जोक के साथ. सो थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे टाइम दिया. इट वाज लवली मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू. थैंक यू. Yeah, 100% Shruti. Thank you so much again for having me.